Assalamu alaikum warahmatullah. I am extremely sorry there was an interruption. तो हम बात कर रहे थे बेसिकली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं बता रहा था कि it takes originates from this distribution substation। जो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो इसको अगर मैं if I put a D over here with this substation, so this is then the distribution substation। इसमें ये जो ट्रांसफार्मर है, तो दिस ट्रांसफार्मर इज विल बी दिस ट्रांसफार्मर इज बेसिकली डेल्टा वाई ट्रांसफार्मर with the Y neutral running। Now ये ट्रांसफार्मर बेसिकली जो फीडर की वोल्टेज है, जो 11 की वोल्टेज है, it steps down this voltage into 400 volts। Here again I will say these voltages are the line voltages। 4 लाइन्स क्यों? क्योंकि आपके पास एक फेज ए, इसी तरह फेज बी, इस तरह फेज सी और इस तरह लाइन न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं कि जो कनेक्शंस या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो रही है आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन ऑनवर्ड, so now this is a secondary distribution। Now let me represent the secondary distribution by SD। अभी इसी तरह सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ दीज 4 लाइंस आर बेसिकली कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। और इससे फिर हम आगे जो कंज्यूमर मीटर पे जो कनेक्शन जाता है, तो और इफ आई मार्क दिस इज अ कंज्यूमर मीटर, I call it a consumer CM stands for the consumer meter। तो this connection of a single phase आप देख सकते हैं from phase C and the neutral, this is a single phase connection। तो आप इन वायर्स को फिर आप these wires are called as service main। So these distributors and the service main are then included in the secondary distribution। You can also say that this distribution substation is also included in the secondary distribution। तो चलें इस बुक की का जो फिगर है इसकी तरफ अगर हम जाएं, तो now you see this is the figure। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, now here this is, आप देख सकते हैं here is now the secondary distribution। ये आप देख सकते हैं this is a feeder, basically a 3-phase 3-wire system in delta configuration, and here is a delta and star connected transformer। Now this is the delta side, the primary winding is in delta connected। You can see from this figure, you see this is in the form of delta connected, and now this is connected in the form of star while the neutral is running। You see this is the neutral line N। ठीक, तो इससे ऑनवर्ड्स जितनी भी फिर आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नाउ दिस इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लस यू कैन से दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज इंक्लूडेड इन दैट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं यू हैव हियर द फेज दे हैव मेंशन इन R, Y, B and a neutral। So you see you have different types of consumers now। कि अगर आपके पास कोई सिंगल फेज कंज्यूमर है, तो नाउ यू सी दिस हाउस वन इज बेसिकली सिंगल फेज कंज्यूमर। तो इसने एक वायर न्यूट्रल से दिया हुआ है और एक वायर जो है दिया है फेज बी से, तो दिस इज सिंगल फेज। अगेन हाउस टू का अगर आप देखें तो न्यूट्रल एंड देन फ्रॉम फेज वाई, तो दिस इज अगेन ए सिंगल फेज कंज्यूमर। इसी तरह अगर आप हाउस थ्री को देखें तो द फेज इज फ्रॉम फेज आर, और इस तरह ए न्यूट्रल लाइन, तो दिस इज अगेन ए सिंगल फेज कंज्यूमर। On the other hand, अगर आप इस फैक्ट्री 3-phase लोड, नाउ दिस फैक्ट्री मीन्स ए स्मॉल फैक्ट्री जिसमें आप कह सकते हैं कोई 3-phase मोटर्स जो हैं तो वो यूज होते हैं, या आप कह सकते हैं कोई भी जो है तो कोई कमर्शियल जगह है जिसमें जो वोल्टेज है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट लाइन टू लाइन वोल्टेज की 400 वोल्ट है।
So now it has a three-phase connection. You see, this is phase R, and this is phase Y. This is phase B, and now this is a neutral point. So now this is a three-phase connection being fed into the factory three-phase load. ठीक, अभी आप देख सकते हैं now these wires that are originating from the distributors and into the consumer house, ये wires जो है ना, these are called as the service main. इस तरह ये जो wires है ना, जो three phase wires आ रहे हैं ना, this is again called as the service main. इसी तरह ये जो wires आपके पास हैं, these are again, this is again a service main. अभी आप देख सकते हैं इधर के जो सिंगल फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी 220 वोल्ट्स, या सिंस इट इज मेंशन्ड ओवर हियर दैट इट इज 230 वोल्ट्स. आप देख सकते हैं दिस 230 वोल्ट्स एग्जिस्ट बिटवीन द फेज आर एंड द न्यूट्रल. सिमिलरली हियर बिटवीन द फेज वाई एंड द न्यूट्रल. इसी तरह हियर बिटवीन फेज बी एंड न्यूट्रल. लेकिन अभी अगर हम लाइन टू लाइन वोल्टेज लें, यानी मींस द वोल्टेज बिटवीन द फेज आर एंड फेज वाई, दिस इज 400. इस तरह बिटवीन वाई एंड बी, दिस इज 400 वोल्ट. इसी तरह बिटवीन फेज बी एंड फेज आर, अगेन दिस इज 400 वोल्ट. तो सिंगल फेज जो वोल्टेज होगी दैट विल बी 230 मेंशन्ड ओवर हियर इन योर फिगर, लेकिन नॉर्मली 220 से 230 के बीच में. और जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है इट विल बी फ्रॉम 400 टू 440, और बट सिंस इट इज मेंशन्ड इन दिस फिगर दैट इज 400, तो 400 वोल्ट. So this is basically the secondary distribution. The secondary distribution starts at the distribution substation and it ends at the service main here. So this was basically the discussion regarding the secondary distribution, and the whole discussion was regarding the AC distribution. So AC distribution includes the feeder, then the distribution substation, I mean the transformer, then the distributor, and then the service main. अच्छा, ये तो हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग AC डिस्ट्रीब्यूशन. अभी जो सेकंड चीज हमने डिस्कस की थी हियर इन दिस के the distribution system regarding the nature of current is basically divided into AC distribution and then divided into DC distribution. So now the next topic we will discuss is the DC distribution system. Now we will discuss DC distribution system. तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं. And here is the DC distribution system. लेकिन before going into DC distribution system, अगर मैं इसको इधर डिवाइड करूं, तो the DC distribution is basically we have two types of DC distribution system. एक DC distribution system को हम कहते हैं two wire DC distribution system, और इसी तरह एक जो DC distribution system है that is a three wire DC distribution system. Let me correct here, we are talking here about the DC distribution system. Okay? So now we have these two types of DC distribution system. The one is known as two wire and the other is known as three wire. Now let us study this in detail. लेकिन before going into the detail of this DC distribution system, हमें क्यों जो है तो DC distribution की जरूरत है? तो the reason is that we know we have DC motors. We know we have DC motors. And there are many applications of the DC motors. तो अब इन DC motors को रन करने के लिए definitely we need a DC supply. We need a DC supply. इसी तरह
हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, यानी जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के लिए भी जो सप्लाई रिक्वायर्ड है, तो दैट इज बेसिकली डीसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड। तो इस केस में भी इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के लिए हम जो डीसी सप्लाई करते हैं देते हैं। तो दैट आर फ्यू ऑफ द रीजन व्हाई वी नीड अ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी डीसी हम अचीव किस तरह करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने ये स्टडी किया कि although we can transmit the power in the form of DC, लेकिन जनरेशन जो हम करते हैं ऑफ द पावर टू बी डू, यानी अगर मैं लिख देता हूँ कि जनरेशन, इसको मैं लिख देता हूँ जनरेशन the generation we do in the form of AC. We do generation in the form of AC, alternating current. You know why we do generation in the form of AC. हम DC में भी कर सकते हैं, लेकिन DC में हम हायर वोल्टेज जो है तो हम जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें हम हायर वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। एंड यू नो द रीजन ऑफ हाई वोल्टेज, तो फिर स्टेप अप भी करना होता है। तो अभी इस जनरेशन से ऑनवर्ड अगर हम इस वोल्टेज को अगर हम स्टेप अप कर रहे हैं टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसको मैं STUP लिख देता हूँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो आपके पास वोल्टेज जो है तो स्टेप अप हो जाएगा। नाउ इफ दिस आप कह सकते हैं ट्रांसफार्मर, फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज नाउ ए ट्रांसमिशन सबस्टेशन। ठीक, अभी अगर हमने DC डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, here the transmission is in AC, but if you want to do DC distribution, so here at the transmission substation we definitely need a step down transformer. For example, if this transmission voltage is 33 kV, so we need to step down this voltage from 33 to 11 kV. और further अगर हमने distribution करनी in the form of DC, so here in the transmission substation we definitely need to have a converter that will convert the AC into DC. Now we have different types of converters, like आप कह सकते हैं we have rectifiers, इसी तरह we have motor generator arrangement, Now here in this motor generator arrangement, the motor is in AC and the generator produces the DC. The motor is being run by the AC and then it drives the shaft of the generator to produce DC. तो फिर इसके onward जो है तो आपके पास जो distribution होगी तो that is in the form of DC. ठीक, अच्छा, now to discuss the two-wire DC and three-wire DC system. Now let us move towards our book. Here you can see in this book we have two-wire DC system and then we have a three-wire DC system. देखें जो पहला फिगर है तो this is a two-wire DC system. You see the two-wire means the first wire is a positive wire and the second is a negative wire. देखें अगर आप normally अपनी बैटरीज के कनेक्शन देखें ना, तो you have a positive terminal and you have a negative terminal. अगर कोई ये पूछे कि this negative terminal is a neutral, तो in DC we do not have आप कह सकते हैं कि a neutral point. This is basically a positive terminal and a negative terminal. And the current आप कह सकते हैं या जो electrons हैं वो या जो charges हैं वो basically flow करते हैं। अगर आप electronic current हैं तो conventional current है तो from positive to negative, और अगर आप electronic current हैं तो from negative to positive. So this is the DC supply. So we have only two wires in a two-wire DC system, the positive and negative. अभी अगर जो हम supply voltage दे रहे हैं, if that is V,
So it means that हमने जो loads connect करने हैं, so we need to connect the load in parallel across this DC supply. So you see, if this is a lane, so this is connected. If this is another lane and this is a motor M, so आप देख सकते हैं they all are connected in parallel. So for example, if this is a 220 volts DC, so this motor length and the second length, they all will get the 220 volts DC. So this is a two-wire DC system. On the other hand, we have a three-wire DC system. Now, what is the difference between the three-wire and two-wire? If I want to convert this two-wire into three-wire DC, so I just will take a connection from this positive and negative, and their center point I will make it ground, and a third wire I will run from this ground. आप कह सकते हैं. तो आप कह सकते हैं कि now this is acting as a neutral, लेकिन this neutral is basically earthed. आप कह सकते हैं this is earthed. अभी आप कह सकते हैं कि this is at zero potential, means this is earthed physically. The difference between earth and ground is that earth is physically connected to the ground, and the ground is anything that is at zero potential. So abhi, this is basically that connection. So now this is the earth. तो आप देख सकते हैं अभी कि इस पॉजिटिव टर्मिनल और न्यूट्रल के बीच में आपके पास वोल्टेज है दैट इज V, और इस नेगेटिव टर्मिनल और न्यूट्रल के बीच में आपकी वोल्टेज है दैट इज माइनस V. This is positive V and this is negative V. So now if I take this the voltage between this positive and negative terminal, so the voltage between the positive and negative terminal will be V minus V. V minus V is because you see the direction of this positive will be, the current will be from positive to negative, and here the direction will be from negative to positive. Positive voltage and negative voltage. So V minus V, the ultimate voltage between the positive and negative, we will have equal to V. So now you see कि जो voltage है जो exist कर रहा है between the positive and earth, that is V, and the voltage that exists between the positive and negative, that is 2V. So अगर आपके पास कुछ इस तरह loads हैं that require the higher voltage, like for example if here this motor अगर इसको erase कर दूं, so for example you see if we have any load that require a high voltage, like for example this motor, so then we can get the connection to this motor from the positive terminal and the negative terminal. So the voltage difference between the positive and negative is then 2V. So the voltage that we will supply to this motor will be then 2V. On the other hand, अगर हमें low voltage equipment जो है हम connect करना चाहते हैं, like for example this lamp, we can either connect them between positive and neutral, or we can connect them between the negative and neutral. So here the voltage across them will be then V, and here this will be V again. So this is the main difference between a two-wire DC system and a three-wire DC distribution system. So this is the end of your course. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सही तरीके से सीखेंगे, और इंशाल्लाह इसके 12 चैप्टर्स के बाद जितनी डिस्कशन है वो हम इंशाल्लाह वक्त में करेंगे. इसके बीच में कोई असाइनमेंट्स क्विज़ वगैरह होंगे तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवर कर दूंगा. तो चलिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें. अल्लाह रब्बुल इज्जत की हालात में बेहतर करें. तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.